Hi everyone. So this is our fourth session in the series of complete React course. इसके पिछले सेशंस में मैंने HTML, CSS, JavaScript और React के फंडामेंटल्स कवर किए हैं. अगर आप complete beginner हो, then I would suggest you first watch those videos and then move on to this video. But if you already have a basic understanding of JavaScript, HTML and CSS, you can watch this video straight away. So in this session, we'll build a real world application, and while building the application you'll get to learn about these topics as well, like global state management, routing and layout, dynamic data handling, reusable components, page setup, styling and user experience. ठीक है, project देख लो. The project that we are going to build in this session, this is this is what you will build by the end of this session. Compile courses, it's basically a simple CRUD application, and using this application you can log into this app with couple of roles. So you have two roles to this application. ठीक है, एडमिन और कैंडिडेट, ये दो रोल्स हैं जिसके आप लॉग इन कर सकते हो इस एप्लीकेशन पे. और इफ यू हैव लॉग्ड इन एज एडमिन देन यू विल हैव एन ऑप्शन टू ऐड कोर्स. यहाँ से आपको एक कोर्स ऐड कर सकते हो, लाइक लेट मी ऐड वन कोर्स जावा कॉन्सेप्ट्स, ड्यूरेशन ले लो 12 घंटे. ठीक है, let's set some rating. Instructor John Smith, beginner, select any language and select any category. Let's say mobile development. Add कर दिया course को. So that course is added now. If you go to courses, you'll see all the list and the list of courses. ठीक है, तो यहाँ पे you can see जो हमने course add किया है, this is added here. You can see the details of that course. You can edit that course. अगर इसको edit करना है सो एडिट कर लो, जावा कॉन्सेप्ट्स फॉर बिगिनर. ठीक है, और फिर इसको अपडेट कर लो, कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली. तो अभी आप देखोगे ये एडिट हो गया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी और टाइटल भी. ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिलीट अ कोर्स. दिस विल no longer available, and then you can log out and log in as a candidate also. ठीक है, सो इस कैंडिडेट से लॉग इन करते हैं. You can log into this, and then if you go to my courses, you have these enrollments to these courses for this user. और अगर आप courses में जाते हो, let's say if you enroll to this full stack development, you enroll to this course, successfully enrolled, फिर आप जब my courses में जाओगे then you'll see that course is enrolled to this user. ठीक है, so all these features implemented in this app, a very basic CRUD application which we will build in this session. So by the end of this course, you will have a pretty good idea about building a React application. So I have created a repository in GitHub for this project. Link is mentioned in the description. You can visit this link and download the full project. ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में and we'll type cmd. Then it will open our command prompt. Then just type npm create wheat at latest. Name of the course, we can keep any name. I will just mention compile courses React JavaScript. Done. cd compile courses, and here I will open the editor. इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, राइट. ठीक है, then open terminal and install the dependencies. npm I, and in the meantime let me delete the things which are not needed. इसको डिलीट कर लेते हैं. app.jsx को खाली कर लेते हैं. index.css भी नहीं चाहिए हमें.
clean all of these things, should be fine. Also, what we would need is to install Tailwind CSS. So Tailwind CSS install करने के लिए you have to search for Vite React Tailwind. It will suggest you this website tailwindcss.com /guide/Vite you have to search for because you have a Vite project. ठीक है, and just follow these instructions to install the Tailwind CSS and add it to your project. ठीक है, इसको कॉपी करते हैं because this we already did, right? npm create Vite and then cd to the project. So let me install Tailwind CSS as a dev dependency because this -d means it will add it as a dev dependency. Okay, if you go to package.json, you can see here Tailwind got added inside the dev dependencies. Okay, and then after that you add this also. This will add a post CSS config file to our project. Let's do this, and then tailwind config.js file. So the copy the contents of this, go to tailwind config and just replace it, save it, and we are good. It will look for the files which has this extension JSTS, JSX and TSX. Okay, and then we'll replace override the styles. So all this is done. Just copy these 3 lines also and add it to your index.css file. And I think we are good to go. I will just run this npm run dev and see what happens. Yep, it's working. If we add a class text for Excel, save, font size increased. ठीक है, तो Tailwind अपनी काम कर रही है. So far good. Now what we will do, we will add one package also to our project which is React Router DOM. क्या करता है ये? It will give you another library for the routing purposes of your project. ठीक है, so open a new terminal because that is running already our local server. So just install npm I react router DOM. That is done. ठीक है, now अभी हम क्या करेंगे, सोर्स में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, components, and then inside components we'll start creating components. First we'll start with the header component. ठीक है, चलो तो हेडर क्रिएट कर लेते हैं. Let's create one component header dot jsx rafe, सेव करो. app.jsx में instead of div let's add the header component. ठीक है, सेव करो और चेक करो, header is working fine. Similarly we will have one footer component, so let's add that. Not here, inside component we need footer.jsx footer, and that's it for now. What we will do, we will also create some pages. ठीक है, and then we will implement the routes inside this app.jsx file. So let me go ahead and create a folder name pages. Inside this page let's have the home page for now. ठीक है, home.jsx. And what we will do, we will on load we will show this page instead of app, and we'll configure the routes here. Now to configure the routes, what we will have to do is we will have to import a set of components. ठीक है, so let me just type in those components. We will import browser router
as router. We will also import routes and the route component. ठीक है. And then inside the return statement, what we can have as router, inside the router we can have routes, and inside the routes we can mention route with path and element. Now this like this, and here you can mention whatever path you want to mention. So let's say if you mention home path here, and home is imported here, imported, so I think we are good. And just close this route tab. You can self close it as well. This is also fine. Okay, so this is the structure how you define routes. Inside router you mention the routes tag, and inside routes you can add multiple routes with different path and the corresponding element. Okay, so for example, right now we have just one page which is home page, and I want to keep it at a path just a slash, nothing else. We can also have something like this, but we'll just keep it just the slash, and the element we want to load is just the home page, which is mentioned here. And now what we will do, if we go to our browser, we will see home is getting loaded, right? So now our app.jsx file is loaded, and it is loading the routes and looking for this path, and then this is, once it matches the current path, it shows the corresponding element. अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह home लिख दूँ और सेव करूँ, see now it is not showing that component. home component अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, but as soon as I type in home और फिर यहाँ पे ये path match हो जाएगा, then this page will load. ठीक है, then this corresponding element will be loaded. This is how it works. So let me remove this and add this header to the home page. ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्योंकि एसेंशियली हमारा होम पेज ही रहेगा वहाँ पर. ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हेडर को. और व्हाट डज इट से, फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट हेडर. I think you mentioned the wrong path, that's why. So this works now. ठीक है. Now I will just add the contents of the header from our repository. I will copy everything and paste here inside the header, save it. This should give us some errors. For the first error, it is saying let's add some logo, so I will delete this react.svg file and add our logo here. Inside the assets folder, let's create one folder, pages, and not pages, sorry. Let me delete, create one folder and call it images, and inside images I will add this logo, not here, inside the image. And now we should have the other errors, which I will remove for now and I will explain later. For now we can also remove these things. These are the things which I'll explain later. ठीक है, is logged in, I will also remove. Let's just keep this and see if it works. It works so far. ठीक है, this is too much zoomed in. Let's keep it 150%. 125 is also fine. Okay, so our header is in place and these links are working. If I click on courses, it goes to courses, but there is no page yet, so that is why you don't see it. That is fine.
Okay, so let's just create these pages, courses and about us, and complete these links. We'll go to pages and we'll create one file called courses.jsx, and then one more file which is about.jsx. ठीक है, again RAFCE save, and just add this into the app component like this. So here we will have courses and about, and the path we will set for courses and slash about. Let's save it. Now wherever you see this path is entered into the URL, and if it matches, it will load the corresponding element mentioned here. So now if I click on courses, it goes to courses. If we go back to about us, that is also working fine. ठीक है. Now I wanted to explain you that what are these link tags. These link tags are nothing but you can understand it as an anchor tag. It does the same thing, just that in case of anchor tag, when you have anchor tags and you click on that link, it reloads the entire page. But in case of link, it doesn't happen. It just refreshes the DOM, the virtual DOM of the React. So that is how it works. And you can import this link from the React router DOM package itself. ठीक है. So यहाँ तक का हो गया header का. Next we'll work on the intro section. Okay, so let's create one file, hero section.jsx. ठीक है, RAFCE, save it, and let's just bring the content of this component from the repository that we have already. Okay, not like this. Let's keep it inside parentheses, and this should be fine. If I save it, I think I might get some error because this event is not there. Okay, so we will have to define this event on get started click. And how we can define this is, I want to navigate to the courses. Okay, let me just first show you how it looks on the page, and then we will do this. ठीक है, इसको सेव करते हैं ऐसे ही और इसको ऐड करते हैं होम पेज पे. ठीक है, तो होम पे चलते हैं, हेडर के जस्ट नीचे में इसको ऐड करते हैं. अभी यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ऐड हो रहा है. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन लेआउट. ठीक है, फिलहाल अभी इसको ऐसे ऐड करते हैं, नॉट लाइक दिस, हीरो सेक्शन. ठीक है, सेव किया और इसको एक फ्रैगमेंट में रखना पड़ेगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स. JSX जो है वो एक्सपेक्ट करती है जस्ट ए सिंगल पेरेंट एलिमेंट. ठीक है, ये हीरो भी आ गए हैं यहाँ पे. गेट स्टार्टेड को हमको अभी इसका इवेंट हैंडलिंग करना है, तो हीरो सेक्शन में चले, इसको अनकमेंट किए और इस क्लिक पे मुझे करना क्या है, मुझे कोर्सेस जो पेज है ना यहाँ पे आना है. ठीक है, लेट्स गो बैक. इसके लिए हमें करना क्या होगा, वी विल हैव टू import use navigation. ठीक है, use navigate from react router DOM, and then you'll have to define a variable which we will define navigate, and this is how you define it. Now then, using this navigate you can navigate to any particular route. ठीक है, सेव करो, चेक करो, काम कर रहा है. ठीक है, सो वी आर गुड. हीरो कंपोनेंट बन गया तुम्हारा. और क्या चाहिए हमें अब नेक्स्ट, फीचर्ड कोर्सेज बना लेते हैं अब नेक्स्ट कंपोनेंट. ठीक है, तो फीचर्ड courses.jsx, और
featured courses में RAFCE, and then let's bring all the content for the featured courses. इसको अभी कमेंट कर देते हैं बिकॉज कोर्स कार्ड कंपोनेंट हमने बनाया नहीं है अभी. Once that is done, we will uncomment that. But for now, you can see. अच्छा, फीचर्ड कोर्सेज को भी हमको इसमें डालना पड़ेगा ना होम पेज पे. तो ऐसे डाल देते हैं फीचर्ड कोर्सेज. सेव करो. देखो यहाँ पे आ गया सेक्शन नीचे. अभी ये लिस्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने ये कोर्सेज को मैप नहीं किया है. ठीक है, so let's do that. So what I need you to do is just set up a mock backend server. ठीक है, and for that we will do npm I JSON hyphen server. ठीक है, and also we will have this file called db.json and we will keep that inside our source folder. ठीक है, this db.json is just a dummy data. I have kept 3 arrays inside this: users, courses and enrollments. ठीक है, this db.json basically will be used as our database now, and once this JSON server is installed, you can check here also. This is now installed, and now all you need to do is go to your package.json inside the no, not inside the dependency, inside the scripts, add server, and this will be watching the db.json file, and port you can keep 3000, should be fine. Now you can type npm run server db.json not found, sorry, src, then slash. Save it and try one more time. Started working. ठीक है, so if you copy this link or control click, this will behave like a backend, and when you hit this endpoint you will get the array list of users. ठीक है, same will work for courses as well. कोर्सेज डाला, ये लिस्ट आ गई कोर्सेज की. ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ फीचर्ड कोर्सेज में, एंड विल गेट दिस कोर्सेज. नाउ हाउ डू वी डू दैट? वी कैन डू दैट यूजिंग यूज इफेक्ट रिएक्ट हुक. ठीक है, इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट. यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं? देखो, यूज इफेक्ट takes one callback function and one array. ठीक है, callback function यहाँ पे declare कर लो like this, and you can write any logic or anything which you want to execute. So this use effect hook can be used to load data initially when you come to this component. When this component is rendered on UI, if you want to load something, if you want to call any API on that point and you want to load some data, for those purposes use effect is useful. It's a side effect to your states. Here this array actually means, so let's say you have few states of this component, let's say users. Okay, let's destructure this users and set users, and this is using use state which is imported here. Since all of this are from React, I can cut this and paste it here, and we should be good. Now if you want to run this logic only when there is a change to this user state, then you can mention this here. Okay,
you can here mention multiple states, and what happens adding those states will that this logic will be triggered only when there is a change to these states. If you don't mention anything here, then that means that this logic will be called once when this component is mounted. Mounted means when it is rendered for the first time, when it is mounted to the DOM, that time it will be called. ठीक है? If you don't mention this array at all, this is also one of the way of declaring use effect. But in this case, it will be called every time when this component is mounted to DOM and unmounted from the DOM, and there is any change with any of the states of these components. So generally, you avoid declaring use effect in this manner so that there are not multiple unnecessary calls. We will do it just like this. We want this to be loaded once you this component is mounted. Now instead of users, we need courses and set courses. ठीक है? Now the logic goes here, and what we want to do, we want to load the list of courses here. How do we do that? We can have constant response equals to fetch and then the endpoint, which is http localhost not this http localhost and then courses localhost colon 3000, right? This will bring you the list of courses. Now constant data res.json, and then you can set the state of this course. And how do we set this? Dynamically, like this. ठीक है? But wait, this fetch returns a promise, so you will have to add an await before this and here also. But wait, again, if you add this await, this must be inside an async function. We will just cut this all and create one more function instead, fetch courses, and let's make it an arrow function, and inside this function we can keep this, and at the bottom we can call this fetch courses function. Now since this function is having await keyword, you can make this function async and this will perfectly work. Now we can log it on the console whether we are getting any courses or not. So let's go and check that. If we see undefined, because we are trying to log courses instead of data. So we are getting the list here. Okay. Now once you can see you are getting the list, which is an array, you can set this to your courses, which is happening here, and we should be good. You can also do one thing, that you can keep your function into a try catch block. ठीक है? Here you can put the try, and here you can print the error error while fetching courses. Okay, and the error which is caught. Sometimes you have loader for an API, right? You want to show the loader on the screen for the time when the data is being fetched from the backend. For that, what you can do, you can define one more state
which is loading and set loading, use state, and then initially you can keep this value to true. And once this is called, you can also have one block here which is finally, and this finally block will anyway run irrespective of whether this block runs, try block runs, or catch block runs. Finally block always runs. So you can set the loading to false inside this. And here what you can do, you can set this set this view, render this view dynamically, that whether if loading is true. Let me cut this, not like this. Let's bring all this inside. It should be fine. This statement should be inside an element. So now you have this, and you can put this condition as ampersand, and here you can put your section. If loading is happening, then you show this h1 stating loading. Okay? Otherwise you want to show this. Something like this you can do with the loaders. Okay, so far we are good. So if we uncomment this and see whether it works, it is working, right? We have just added this courses.title. Instead of this, what we will do, let's keep that, and let's create course card component first. So go to component, create this course card.jsx, and then refce, save, and then what we will do, we will just create a card here. Let me bring the HTML content for this page, paste this, save it. Now what we need to do, we need to pass a prop from the featured courses component to course card component. ठीक है, ये course card component क्या है, ये reusable component बना रहे हैं हम लोग, जो use होगा on different pages. ठीक है, you will have this on to courses page, you will have this on the featured courses, enrolled courses. ठीक है, so once you are done with this course card, you'll be able to use this component at multiple places. Wherever you want to show the list of cards, list of courses, and courses will be visible in the cards. ठीक है, so course card component create कर लिया हमने, and we'll have to pass a prop here. So इसको डिलीट कर देते हैं, और कोर्स कार्ड में हम क्या पास कर रहे हैं, कोर्स प्रॉप पास कर रहे हैं. ठीक है, which is equivalent to this course. This is iterating over courses, right? So in each iteration it will pass the course object into the course card component. Now if we save this and go to course card component, we need a prop here, right, which is used here. And one more thing, here we have an event on view detail click. So for now, if I comment this and save it, are there any errors? Cannot read properties of undefined reading map. Featured courses में line number 33 पे ये error है. So let's go to this, because this is not imported also, right? We need to import this. So import course card component from course card. Save this, and it's not able to read the map property. It means somehow this courses is not of array type. We are declaring it here. Oh,
While declaring it, we can set the default value as empty array. Okay, this should resolve, yes. So this resolves the issue, and again we do not need this. Let's now use the course card, and if you go to course card component, here I have added one prop as well, and this prop is getting used at these places. Okay, let's just save this and see everything is working fine. Yes, you are seeing one more error with respect to the key. Let me explain you what is it. If you don't add a key here, once you are using a map and save this, you will see that React will say each child in a list should have a unique key. So that you can add by having the course ID. Either you could have had course ID, or in some cases, what you can have, map functions give you one more argument to pass, which is index, and you can mention that here also. But it's good with course ID. You save this, and now that error is gone, and you can see the list of courses. Okay, in the featured courses. Now, if you want to show only, let's say, 3 courses here, one way of doing it is just putting a limit uh, underscore limit equals to 3. Save it, and this has only 3 featured courses now. Okay, so far we are good. हेडर हो गया, गेट स्टार्टेड पे गए तो कोर्सेज पे चले गया, और अबाउट अस पे गए तो भी कोर्सेज पे चले गया. चलो अभी इन लिंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं. कोर्सेज पेज लिख लेते हैं और अबाउट अस. लेट्स गो अहेड विथ द अबाउट पेज फर्स्ट, and how we will do that is just we will create one about page inside the pages folder, about.jsx. A file or folder already exists, maybe already created, my bad. So we will go to about.jsx and we will bring the contents of about here. So this is fine. If we go back to our app, we go to about, and you see this about us here. Let's have a footer also on our home page. So if we copy the contents of footer and paste it inside the footer, ठीक है, उसको सेव करते हैं और let's go to our home page. Okay, we'll have to import this also as well, right? So we have written the footer component, and let's go to our home page, which is here, and here you can add footer also. Save this, and you'll see footer on home page. Okay. Let's write the courses page now. So inside the courses page, we will bring the content of the courses, which is this. Now let's take a look what all these things it has, what all the things that it has. First of all, we need the courses array, right? And for that, we can do the same thing as we have done for the featured courses, right? If we go to featured courses, we can use this, which we are doing. Go to courses and just paste it here. We need to import few things, so let's just import. First is React, and use effect and use state. ठीक है, use state यहाँ पे यूज हो रहा है और use effect यहाँ पे, तो दोनों import हो गया. You have set the courses also, and you don't need the limitation here because this is all the courses. If I save this and go to our courses page, just take a look what is the error. Course card is not defined, so we have to import course card as well. So import course card, save this, and you see all the courses have come here. So far हमने इन 3 links को prepare कर लिया. Home, you are already at the home, which have header, this hero element,
and then featured courses and then footer. ठीक है, next you have courses and then next you have about us. ठीक है, now you are noticing one thing on these pages, like on courses you don't have the header and footer, same for about us also. Now if you want to header and footer on all the pages, one thing is you can copy paste the header content on all the pages, which is not a good practice. If you need to modify something in your header or footer, you'll have to modify that at all the places. And the second thing is it's very verbose and it's not a good practice of doing that thing. So what you can do for that, you can use layouts. What is layouts? Layout is basically a kind of structure which you can have for your application to show different parts of the content at different pages, right? So you can have multiple layouts in your project. For example, let's say I create a folder here called layouts, and inside this I create one file called main layout.jsx. ठीक है, is RAFCE, and I would like to import outlet from React router DOM. ठीक है, second thing we need header and footer. ठीक है, we need to show all both of these components, right? Header and footer. So now how we do that? We can just simply have header, not like this, header and footer. ठीक है, and this can be inside a fragment. ठीक है, और इसके बीच में you want to put all your pages, whatever all the pages you have apart from header and footer. Courses हो गया, बाद में you will add few more pages like enrolled courses, add courses, update courses. All those courses should go here because on all the pages you need these two components. ठीक है, तो उसको आप add कर सकते हो like this. It can behave like a component. It is rather a component only. So you can do that, and that way if you go to courses, wait, one more thing, what we'll have to do now, we have created a main layout. Now we want to change our routing with respect to this main layout. Okay, let's go to app.jsx file and we will just have a parent element of route. ठीक है, इसको ऐसे कर लो और यहाँ पे ये मेंशन कर लो पाथ और एलिमेंट. ठीक है, और इसमें तुम डाल सकते हो मेन लेआउट को. ठीक है, ये इंपोर्ट भी हो गया यहाँ पे. और अब अगर इन सारे पेजेस को आप इसके अंदर डालते हो, सेव करते हो, सो दिस राउट पाथ बिकम्स पेरेंट ऑफ ऑल दीज पेजेस. ठीक है, सो दिस लेआउट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल दीज पेजेस. इफ यू वांट टू हैव सम पेजेस जिस पे आप चाहते हो ये लेआउट अप्लाई ना हो, तो वो इसके आउटसाइड यहाँ पे कर लो डिफरेंट राउट सेपरेट ऐसे करके, विच वी विल डू इवेंचुअली फॉर लॉगिन एंड साइन अप पेजेस. ठीक है, तो वो यहाँ पे कर लेंगे. फिलहाल के लिए इसको कमेंट करके रखते हैं, विल ऐड लॉगिन एंड साइन अप पेजेस, बट दिस इज हाउ यू डू इट. एंड फॉर the home element, now you can just mention index instead of path. Save this and let's go to our application, and you can see there are two headers and two footers are coming because we don't need the where is that home page. Let's go to pages inside page home, and now we do not need this header and footer here anymore because that is already mentioned. ठीक है, तो ये होम पेज पे हेडर और फुटर है. इफ यू गो टू कोर्सेज you still have those header and footer, and same for about us also. ठीक है, little bit of styling for this footer. What we will do,
we can set the classes. Let's go to main layout, and this entire thing can be added inside flex space column space not space dot min height screen. ठीक है, and then let's keep all this inside this div, and then you can have a main component with class flex group. ठीक है, and inside this you can have your outlet, and you can see that this has come at the bottom, home, courses and about us. ठीक है, next let's just set up the sign up and login pages. For that you need to add two pages, login and sign up, inside the pages folder. So let's go to login.jsx and one more file, signup.jsx. ठीक है, login.jsx में you can have this content which has one input field, one input per password, and the buttons. ठीक है, now there are two buttons, cancel and login. The login button has the type submit and the cancel button has the type button. Okay, then we have a link to sign up. Don't have an account. If you don't have an account, then there is a link to sign up, and which is redirecting to sign up page. Okay, so let's just save this and copy the sign up content as well. Come here, paste it. In the sign up page you have a form which has input for email and then password, and then for confirming the password and then selecting the role, and then you have a couple of buttons, one is for cancel, one is for sign up. Okay, so there are bunch of functions also which I will just explain, but before that let's go to our app.jsx and add these pages to the routes. So this will now be coming outside this layout, right? We do not want header and footer on the login and sign up pages. So here we will mention login and here we will mention sign up. ठीक है, let's just save it and see. User context. Okay, so context is something which I have not explained to you. Let me explain what is use context. So use context is a React hook which you can use to pass in data from a provider to a consumer component, right? Let's say if you want to pass a data from a parent to child, you can communicate or you can send the data using props. But let's say there are a long hierarchy, or maybe there is some data which you want to use globally. You want to store some data and that data you want to use at multiple places in your application. Then instead of using props to send from parent to child, you can use context. Now how it works, you have to create a context which will work as a provider, and then you can consume that data across your application in different components. You can import that context which you just created and then you can use it. This is the way of doing it in a nutshell. So let us just create that context, and for doing that we will have to create a folder and name it as context, and let's just create one file, user context.jsx. ठीक है, now why we are creating a context for user? Because we want to set up a login and sign up page. Once user is logging in, we want to know at multiple pages that whether the user is logged in or not, and what is the role of that user. These two information we need at multiple places. We will need that data on header,
because based on this role, we want to show and hide different links. There will be one more link here, add course, which will come for admin, and there will be a link called my courses, which will appear for candidate role. So conditionally, based on the role, we want to show and hide some links here in the header. Also on different pages, we want to do the conditional rendering. For example, let's say you click on featured courses, you go to view detail, which is not set up yet. You go to a detail page of a particular course, and there, if you are a candidate, you can enroll to that course. But if you are logged in as admin, then you can add, update, or delete that course. So these are the things for which we are creating this context. Okay. Now for creating a context, what you need to do, you need to import create context. Also, we would need use state. So let me import that as well from React. Okay. Now export constant user context, create context. Something is wrong. Oh, I mentioned in capital R, it should be in small. Okay, this is how you create a context. You import this from React, and then you can just declare a variable user context, and you can export that, which we are doing. So we'll be able to import this user context at multiple places in our application. Okay. Now one more thing, what we want to export is user provider. Okay. Now how do we do that? We declare a function, and inside this, let's have a couple of states. One is for user, set user, use state, let's say initial value is null, and then is logged in, and set is logged in, and use state, and initially we can set the value to false, that initially user is not logged in, and then you can return this user context. Okay. User context dot provider, not user context, sorry. So we are creating a provider basically. So user context dot provider, and you need to have a, you need to mention the children here. Okay. So this is done, and the value which you will be passing is an object. User set user is logged in, and set is logged in. At different pages, we need different kind of data. Somewhere we'll need user, somewhere we'll need is logged in, and so on. Okay. And this will work as a prop. Okay. So now we are good here with creating the context. Now let's just use it. How we can use it here? We just imported the user context, right? And then we have set this user and set is logged in by using the use context. Okay, and we have passed the user context. This is the way you can use these data globally. You can consume this data globally. You can create a context somewhere and use it elsewhere. If we save this and you go back to our app, this is working fine, right? Now we had removed the links from the header. So we'll go back to our header and we'll bring back those links. Let me just copy this and paste it. Let me quickly explain also. So we are first checking for is logged in, which we have not imported. So we will have to import that as well. So use navigate, let's add use context also. And then
inside header, what we can do, we can have user is logged in and set is logged in, ठीक है, to use context. And what is the context that you are using? User context, ठीक है. So if you're using this user context, you need to import this. So this is suggesting you as well. If I click this, this is imported, ठीक है. Now you can use this. So you are basically destructuring it. Using this use context, you are basically getting the data which is provided by this user context in this format, and then you are destructuring it into this form so that you have data for user is logged in and set is logged in, ठीक है. Now let us go back to our login page, sorry, not login, header page, and also we would need to initiate the navigate, which is what we have done, but we have not declared this navigate. So use navigate, that's it. And the next thing we need to do is we have a login and logout buttons. So on logout we have a callback function which is handle logout, ठीक है. So we will have to declare that as well. So let's declare handle logout. Let's make it an arrow function, and inside this function what you need to do is you need to set is logged into false, right? This is what I was talking about. So inside the header component you need to access this property is logged in, and you need to set this from true to false, because once user click on logout, it is no longer, the user is no longer logged in. So you need to set this value to false. That's what you are doing here. And then after that, let's just log it on the console that user is logged out, and after that just navigate to home, okay. I think we are good with the header. You have here user role. If you have access to user role, then you can check if it is admin, then you will show add course. Otherwise, if it is candidate, you can show my courses, and all these conditions will be shown once user is logged in. If user is not logged in, then we will not show anything, we will just show login, okay. If I just save this and go to our page, the requested does not provide an export named use context. Use context, something is wrong with the imports that we have. Link use, oh, use context is not from React Router DOM, it is from React. So we will have to import it from React. Use context, not user, use context. If I save this, now we have, and also we should do it before, and let's just see what else we have in the error. Cannot destructure property user of use context as it is undefined. User is not defined. Cannot destructure property use context is undefined. Let's just log it on the console if this, if we can get some value for this. Use context, save this और check करते हैं console पे. Use context undefined. Somehow this use context is not provided to this component. Where is our provider? So we'll go to user context. This is our provider which we are exporting already. If we copy this, have we, okay, we have not. So we also need to do some changes to our main.jsx file, ठीक है. ये जो app component है, which is our root component, फिर everything is this, once this app component is loaded, and then there is a hierarchy, right? Inside this app component we have mentioned, we have configured all the routes, and based on the routes different pages are rendering. But what we need, जो हमने user provider बनाया हुआ है,
वी वांट दिस कॉन्टेक्स्ट टू बी अवेलेबल फॉर द इंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस ऐप को रैप करना होगा विद आर यूजर प्रोवाइडर। कैसे करेंगे उसको, वी कैन इंपोर्ट दैट यूजर प्रोवाइडर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। क्यों कर पा रहे हैं हम ये, बिकॉज यूजर कॉन्टेक्स्ट में हमने यूजर प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट करके रखा है। ठीक है, क्या है इस यूजर प्रोवाइडर में, एसेंशियली हमने दो स्टेट्स डिक्लेयर किए हैं सिंपली, एक यूजर के लिए, इज लॉग्ड इन के लिए, एंड देन वी आर वी हैव सेट द यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, उसमें वैल्यू हमने पास की है एज अ प्रॉप। तो इन वैल्यूज को हम एक्सेस कर पाएंगे जब हम अपने पूरे ऐप को रैप कर देंगे इस प्रोवाइडर से। कैसे करेंगे, इसको इंपोर्ट किया और फिर यहाँ पे इसको कट करके यूजर प्रोवाइडर, एंड देन आई थिंक वी आर गुड। ठीक है, सो ये लॉगिन हो गया। और फिर उसके बाद हेडर में देखोगे तो यहाँ के जो नीचे के लिंक्स जो हमने ऐड किए हैं, माई कोर्सेज लॉग आउट एंड लॉग इन, बिकॉज अभी यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, इनिशियल वैल्यू जो है वो फॉल्स है। यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट में कंसोल पे लॉग भी कर लिया यूज़ कॉन्टेक्स्ट को। तो इससे पता चल रही है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू क्या है। यूज़र नल है, इज लॉग्ड इन फॉल्स है, सेट यूज़र इज अ फंक्शन एंड सेट इज लॉग्ड इन ऑल्सो अ फंक्शन। तो इज लॉग्ड इन जो है वो फॉल्स है, दैट इज़ वाई इसका ट्रू वाला ब्लॉक अभी रेंडर नहीं हुआ है, फॉल्स वाला ब्लॉक रेंडर हुआ है, विच इज़ दिस लॉगिन लिंक दैट यू कैन सी हियर। अभी इसको चेक कर लेते हैं कि लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं। लॉगिन पे गए, लॉगिन पेज पे चले गया, साइन अप पे गए, साइन अप इज आल्सो रेंडरिंग फाइन। इफ यू गो टू कैंसिल, दिस इज गोइंग बैक टू लॉगिन। ये सब जो लॉजिक है वो ऑलरेडी रिटर्न है। जैसे साइन अप में जाओ, साइन अप में यू हैव दिस कैंसिल बटन, राइट। कैंसिल बटन का टाइप क्या है, कैंसिल, और ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, ऑन क्लिक पे दिस इज सिंपली नेविगेटिंग टू लॉगिन पेज। इसी तरह से लॉगिन पेज में जाओगे, लॉगिन पेज इज हियर, लॉगिन पेज में इफ यू क्लिक ऑन कैंसिल विच इज ऑफ टाइप बटन, और ये ऑन क्लिक पे कहाँ जा रहा है, नेविगेट बैक टू होम। सो ये ऑल नेविगेशंस आर वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स जस्ट चेक वेदर आर लॉगिन यूजर इज एबल टू लॉग इन और नॉट। तो यूजर लॉगिन कैसे करेगा, उसके लिए एक बार मैं आपको लॉगिन जो पेज है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, लॉगिन पेज पे हमने यूज कॉन्टेक्स्ट, जो हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है यूजर कॉन्टेक्स्ट, उसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे दिस इज हाउ यूजिंग दिस यूज कॉन्टेक्स्ट वी कैन गेट द एक्सेस टू द डेटा विच वी आर प्रोवाइडिंग इनटू दिस यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैंने इसको कंसोल पे लॉग करके भी दिखाया था कि हमें क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं। हियर यू कैन ऑल्सो डू दैट, कंसोल डॉट लॉग, लेट मी जस्ट शो यू कि ये क्या क्या वैल्यूज हमें दे रहा है। लेट्स हैव दिस एंड दिस, सेव दिस, गो बैक टू ब्राउजर। देखो यूजर कॉन्टेक्स्ट हमें यूजर दे रहा है विच इज नल एट द मोमेंट, इज लॉग्ड इन, और दो फंक्शंस दे रहा है। ठीक है, इज लॉग्ड इन को हमको क्या करना है, सिंस वी हैव द एक्सेस टू दिस डेटा, जब हम इसको लॉग इन करेंगे, वंस द यूजर इज सक्सेसफुली लॉग्ड इन, तब हम इज लॉग्ड इन को फॉल्स से ट्रू पे सेट करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स डीस्ट्रक्चर करके रखे हैं और इसको हम यूज कॉन्टेक्स्ट को असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ हाउ डीस्ट्रक्चर वर्क्स, ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी जावास्क्रिप्ट वाले जो बेसिक्स है उस वाले वीडियो में, बट लेट मी जस्ट ब्रीफ यू वंस मोर। देखो, अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ओबीजे, और इसके अंदर कोई दो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, नेम, लेट्स से एनीथिंग, कंपाइल कोड्स, और कुछ भी ले लो, एज ले लो, चलो एज ले लो, लेट्स से 25। ठीक है, अभी इसको तुम्हें मान लो इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो तुम कैसे करोगे, ओबीजे डॉट नेम एंड देन ओबीजे डॉट एज, ऐसे करके एक्सेस करोगे, राइट। अगर जाते हो वापस से ब्राउजर में, सो यू कैन सी नेम एंड एज यहाँ पे दिख रहा है। बट इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग दिस, अगर इसके पहले तुम इसको इस तरह से डिक्लेयर कर लो, डिस्ट्रक्चर करके रख लो, जैसे कि नेम कॉमा एज। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट को असाइन कर दो इस को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने असाइन कर दिया है इस डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग ओबीजे डॉट एज एंड ओबीजे डॉट नेम, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दीज प्रॉपर्टीज, नेम एंड एज। अभी सेव करो, अगेन you'll be able to see compile codes name and age। ठीक है,
दिस इज हाउ इट वर्क्स, द डिस्ट्रक्चरिंग। एंड यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अगर एज को आपने पहले डिक्लेयर कर दिया और नेम को बाद में, तो भी वो नेम को नेम और एज को एज प्रॉपर्टी असाइन होगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको कंसोल पे लॉग करूंगा तो देखो सेम ही है, पहले नेम आ रहा है फिर एज आ रहा है, ठीक है। इट डजेंट मैटर दी ऑर्डर ऑफ हाउ यू आर डिक्लेयरिंग इट। एंड ऑल्सो अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हैं, बट तुम डिस्ट्रक्चर मान लो दो नहीं तीन ले लो, कोई एक और प्रॉपर्टी ले लो, लेट्स से कुछ भी ले लो, प्रॉप ही ले लो, और प्रॉप का वैल्यू कुछ भी है लेट्स से, ठीक है। तो इसमें तीन प्रॉपर्टीज है इस ऑब्जेक्ट का, लेकिन तुम दो ही डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, फिर भी वो काम करेगा, इट डजेंट मैटर, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रक्चर ओनली दीज मैनी प्रॉपर्टीज, और इनको तुम एक्सेस कर ले रहे हो। दिस इज वॉट इट इज हैपनिंग ईयर। यहाँ पे अगर तुम यूजर प्रोवाइडर यूजर कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो एसेंशियली यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट के अंदर चार प्रॉपर्टीज पास हुई है, राइट। यूजर इज लॉग्ड इन एंड सेट इज लॉग्ड इन, और यहाँ पे तुम उसको लॉगिन में डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, ओनली सेट यूजर सेट इज लॉग्ड इन एंड इज लॉग्ड इन। जिन प्रॉपर्टीज की जरूरत है उनको तुम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे यूज कर ले रहे हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स हो गया तुम्हारा डिस्ट्रक्चरिंग का। नाउ वंस वी हैव द एक्सेस टू द वैल्यूज, फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे एक यूज स्टेट रखा है फॉर्म डेटा के लिए। फॉर्म डेटा क्या है, फॉर्म डेटा का देखो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड है, डिफॉल्ट वैल्यूज एम्प्टी स्ट्रिंग है दोनों के लिए, ठीक है। एंड देन जस्ट वी हैव डिक्लेयर्ड द नेविगेट टू नेविगेट फॉर डूइंग द नेविगेशन। फेच यूजर्स डेटा, हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स डेटा फेच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको, ये पता चलेगा अभी। यहाँ पे देखो हमने इसको कॉल किया हुआ है हैंडल सबमिट पे। नाउ हैंडल सबमिट बटन देखो यहाँ पे है, यहाँ जहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्म। This form essentially have this input field for email and password, and then simply two buttons, cancel और login, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ईमेल पासवर्ड कैंसिल और लॉगिन। तो इस फॉर्म के अंदर जब आप ये ऑन सबमिट बटन, मतलब ऑन सबमिट प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो, तो इफ यू हैव अ बटन विथ टाइप सबमिट, तो जब इस बटन को क्लिक करोगे तो इवेंचुअली इस प्रॉपर्टी से बाइंड जो फंक्शन होगा ना वो ट्रिगर होगा, यानी इनके इस केस में हैंडल सबमिट ट्रिगर होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है। और इसकी पहली लाइन आप देख रहे हो लिखा है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे ई हमने पास किया हुआ है, मतलब ई यहाँ पे इवेंट को कैप्चर कर रहे हो। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होगा, जो जब किसी फॉर्म को सबमिट करते हो ना, तो जो उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होगा, उसको हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एंकर टैग होता है, उसको आप क्लिक करते हो तो पेज को लोड करता है। द सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ फॉर्म्स ऑल्सो। जब फॉर्म को आप सबमिट करते हो, सो इट कैन रीलोड द पेज, जिसे हमें अवॉइड करना है। सो फॉर डूइंग दैट, फॉर अवॉइडिंग और फॉर प्रिवेंटिंग एनी डिफॉल्ट बिहेवियर्स, यू कैन यूज दिस ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सो हम क्या करेंगे, कस्टम तरीके से हम खुद से इसका सारा बिहेवियर यहाँ पे राइट करेंगे। दैट्स वाई दिस ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इज रिटन हियर। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर डेटा हमको चाहिए, और उसके लिए हमने क्या किया, ये जो फेच यूजर्स डेटा था जो यहाँ पे कॉल हो रहा था, वहां से हमको यूजर्स का डेटा मिल जाएगा। यूजर्स के डेटे के लिए हमने क्या किया है, सिंपली एपीआई, ओके। ये एपीआई नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी इसकी प्रॉक्सी सेट नहीं किया। सो दिस विल बी लोकल होस्ट कोलन 8000, ठीक है। इस एंड पॉइंट से हमको यूजर्स मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ यूजर्स मिल जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको फेच करके यूजर डेटा में डाल दिया। फिर ये करना क्या चाह रहा है, मैच कराने के लिए, जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, सो इट शुड बी मैच्ड विद द ईमेल एंड पासवर्ड। दैट्स व्हाट इट्स हैपनिंग हियर। यूजर डेटा डॉट फाइंड मेथड यूज करके वी आर मैचिंग इफ दिस यूजर डॉट ईमेल इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, जो हमने यूजर ने एंटर किया है यहाँ पे फॉर्म में, ठीक है। एंड सेम विद द पासवर्ड ऑल्सो। सो यहाँ पे हम जो फॉर्म में जो भी ईमेल और पासवर्ड डलेगा, इट विल फाइंड कि जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट में जितने भी यूजर्स हैं उनमें से किसी भी ईमेल और पासवर्ड के साथ मैच हो रहा है क्या, और एंड कंडीशन के साथ मैचिंग है यहाँ पे, देखोगे आप तो दोनों मैच होना चाहिए। दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। अगर हो गया तो फिर इसका जो जो बूलियन है ये रिटर्न करके रख रहा है यूजर में, तो यूजर क्या होगा, अगर ट्रू है तो फिर हम यूजर को सेट कर देंगे, लॉग्ड इन सेट इज लॉग्ड इन को भी ट्रू कर देंगे और नेविगेट कर देंगे। अदरवाइज इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड इसको शो कर देंगे यूजर को। सेट यूजर देखो ये वही सेटर है जो हमने एक्सेस किया है यूजर कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है।
तो यूजर की जो यूजर लॉग इन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड लॉग्ड इन अगर हो चुका है तो सेट इज लॉग्ड इन भी ट्रू कर दे रहे हैं। दैट मीन्स इज लॉग्ड इन जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। शुड बी फाइन। अगर हम जाते हैं वापस से लॉगिन पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, जॉन विच इज ए कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे जाओगे db.json में, इसका रोल देखोगे जॉन का। सो ही इज़ अ कैंडिडेट, ठीक है। तो हमको एज अ कैंडिडेट लॉगिन हो जाना चाहिए। लॉगिन किया, फेल टू फेच यूजर्स डेटा, what is wrong, 8000, no, 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 not the 8000, I think the port is 3000। सेव किया, फिर से चेक करते हैं, नॉट एडमिन, वील डू इट लेटर, पहले कैंडिडेट से लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया, वी आर एबल टू लॉगिन, ठीक है। ये क्रोम बस वार्निंग दे रहा है, पासवर्ड इज ब्रीचेबल, ठीक है। तो देखो, क्योंकि कैंडिडेट से लॉगिन किया है, तो यू हैव वन मोर एडिशनल लिंक हियर विच इज़ फॉर माई कोर्सेज, जो कि हमने अभी सेट नहीं किया है। सो इस पर क्लिक करोगे तो इट विल गो टू माई कोर्सेज, बट देर इज़ नो मैचिंग राउट, ठीक है। अगर app.jsx में जाओगे तो माई कोर्सेज जैसी कोई राउट यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी पेज शो कर रहा है। एंड अगर आप लॉग आउट पे क्लिक करते हो तो लॉग आउट हो जाएगा, सिंपली लॉग आउट होके अगेन यू डोंट हैव दैट माई कोर्सेज लिंक एनीमोर। सेम गोज फॉर इफ यू क्लिक ऑन लॉगिन, और अभी अगर एडमिन से लॉगिन करते हैं एंड यू क्लिक ऑन पासवर्ड विच इज एडमिन, व्हाट इज द पासवर्ड फॉर द एडमिन, यहाँ पे है, ठीक है, admin123। सो किया, देखो इन केस ऑफ एडमिन यहाँ पे लिंक जो है वो ऐड कोर्स है। ऐड कोर्स पे क्लिक किया, ये ऐड कोर्स पे जाएगा, अगेन ये पेज फाउंड नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी पेज पे जा रहा है, बट वील हैव टू क्रिएट दैट पेज। सो बट फॉर नाउ आवर लॉगिन इज वर्किंग फाइन। अगेन इसको एक बार अच्छे से समझ लो। व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव अ फॉर्म, इनसाइड द फॉर्म वी हैव अ लॉगिन बटन, जिसको क्लिक करने पे ऑन सबमिट हैंडल सबमिट कॉल हो रहा है। इनसाइड हैंडल सबमिट वी आर फर्स्ट प्रिवेंटिंग द डिफॉल्ट, trying to fetch the user data. Once you have the user data, you are just matching the email and password uh, with the entered email and password. And if it matches with any of the users which you have inside this, then what we are doing, we are setting the user details, we are setting the property of is logged in, and then we are navigating to the home page। और यहाँ पे else statement भी mentioned है, invalid username और password, तो in case वो भी देख लो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। लॉग आउट किया, फिर लॉगिन पेज पे गए, अगर मान लो कुछ भी डाल दो यूज़र पासवर्ड और लॉगिन करो, तो इट विल से इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि ये यूज़र नेम मैच नहीं हुआ किसी भी यूज़र से जो हमारे डेटाबेस में है, ठीक है। सो सो फार लॉगिन और साइन अप काम कर रहा है। नेक्स्ट वी विल वर्क ऑन दी माई कोर्सेज एंड एड कोर्सेज पेज। चलो तो माई कोर्सेज और एड कोर्सेज बना लेते हैं। वी विल गो टू पेजेस, इसमें न्यू फाइल क्रिएट करते हैं विच विल बी एनरोल्ड courses.jsx, ठीक है। and one more page that will be add course.jsx, ठीक है। इसका कंटेंट लेके आ जाते हैं, एनरोल्ड कोर्सेज को इधर डाला एंड सेव इट, एंड सेम फॉर दी ऐड कोर्स, ठीक है। ऐड कोर्स, ओके, आई मिस्ड इट। ऐड कोर्स में ये डालेंगे और एनरोल्ड कोर्स में दिस वन, ठीक है। तो पहले तो ऐड कोर्स को समझ लो। ऐड कोर्स में देखो क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ऐड कोर्स में हमने डिफाइन किया एक स्टेट विच इज कोर्स, ठीक है। और उसकी सारी प्रॉपर्टीज ले ली हमने। db.json में देखोगे जो भी प्रॉपर्टीज हैं किसी एक कोर्स की, ठीक है, टाइटल, ड्यूरेशन, रेटिंग, इंस्ट्रक्टर, लैंग्वेज, लेवल एंड कैटेगरी।
ये हमने मेंशन कर लिया और सबकी इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है, रेटिंग की डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल दी है, बाकी सबकी एम्प्टी स्ट्रिंग है। देन नेविगेट, यूज नेविगेट को हमने इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे नेविगेट वेरिएबल में रख लिया है। देन हैंडल इनपुट चेंज, ये मेथड है जो ट्रिगर होगा किसी भी इनपुट के चेंज पे, ठीक है। जब भी कोई इनपुट एलिमेंट में दिस प्रॉपर्टी ऑन चेंज प्रॉपर्टी, ये जिस भी फंक्शन से आप बाइंड करोगे हैंडल इनपुट चेंज से, और उसका अगर आप इवेंट कैच करोगे, सो यू कैन गेट दीज वैल्यूज। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको लॉग करा के दिखा देता हूँ कि इवेंट में आपको क्या क्या मिलता है। पहले इसको देख लेते हैं वेदर वी आर एबल टू रेंडर दिस पेज और नॉट। तो लॉग इन करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर ऐड कोर्स, तो वो किस में होगा, एडमिन यूजर में होगा, राइट। लॉग इन किया, नाउ वी हैव दिस ऐड कोर्स, बट ऐड कोर्स को अभी हमने ऐड नहीं किया है अपने राउट्स में। सो फर्स्ट वी विल गो टू app.jsx, और ऐड कोर्स और माई कोर्सेज दोनों ही ऐसे पेजेस हैं जिसमें हमको हेडर और फुटर चाहिए, तो इस लेआउट के अंदर में करेंगे, ठीक है। दिस लेआउट शुड बी द पेरेंट लेआउट फॉर दीज राउट्स। तो दो राउट्स डिफाइन करो, वन विल बी माई कोर्सेज, जिसके लिए हम जो कंपोनेंट यूज करेंगे दैट इज एनरोल्ड कोर्सेज, एंड दिस वन इज ऐड कोर्स, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे ऐड कोर्स कंपोनेंट, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड देन यू कैन सी ऐड कोर्स पे ये आ गया, ठीक है। नाउ जब तुम किसी भी इनपुट फील्ड में कुछ प्रॉपर्टी राइट करोगे, कोई कोई वैल्यू डालोगे, तो देखो ये उसका ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होगा, और दिस इज द इवेंट दैट यू आर गेटिंग। इसमें यू कैन गेट ऑल दीज प्रॉपर्टीज, इवेंट फेज बबल्स ट्रू कैंसिलेबल। यू ऑल्सो हैव दिस प्रॉपर्टी टारगेट, जिसके अंदर तुमको एक वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, एंड देन देर आर अदर प्रॉपर्टीज एज वेल, ठीक है। सो in most of the cases we want to get this value property, ठीक है। so that you can get by having this go to add course, and if you type e dot target dot value, तो जो भी टाइप किया होगा तुमने उसमें वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने सेव किया, अभी इसको हम रेंडर करते हैं, इसमें कुछ लेट्स टाइप इन समथिंग, देखो ए एस, जो उसकी वैल्यू है वो आ जाएगा। हमने इसको डीस्ट्रक्चर किया है नेम में और वैल्यू में, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं कोर्स प्रॉपर्टी को, इस कोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेट करेंगे यूजिंग द सेटर ऑफ दिस स्टेट। और ये जो डिफाइन करने का तरीका है, वो तरीका क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इन दिस केस यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट, दिस एंटायर ऑब्जेक्ट इज द कोर्स ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब जब आप डॉट डॉट मेंशन करके कोर्स लिखते हो, दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एंटायर थिंग। यहाँ पे या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो पूरा, लाइक दिस। और फिर यहाँ पे नेम डायनेमिकली यूज हो रहा है, मतलब कि जो नेम यहाँ पे मेंशन्ड है उसको आप विद इन ब्रैकेट्स मेंशन करके लिख सकते हो, एंड दिस यहाँ पे एक कंडीशनल इसकी वैल्यू के लिए, अगर मान लो ये कंडीशन हटा दो तो थोड़ा इजीली समझ जाओगे। नेम और वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, जो भी इनपुट वैल्यू चेंज हो रही है उसकी, उसका ई डॉट टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी है और वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो सिंपलर टर्म्स में ये समझ लो कि यहाँ पे इसको हमने मेंशन किया है ऐसे, ताकि बाकी की जो प्रॉपर्टीज हों वो एज इट इज रहें, ओनली द प्रॉपर्टी विच वी आर एडिटिंग। जैसे यहाँ पे हम कौन सा एलिमेंट वो अपडेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, दिस इज आवर टाइटल। तो टाइटल जब चेंज हो रहा है दैट मीन्स सिर्फ इसमें चेंजेस हमको चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। अगर हम ये सेट कोर्स करते वक्त अगर ये प्रॉपर्टीज ना रहे, लेट्स से हम सिर्फ इसी को चेंज करें, ठीक है, तो सेट कोर्स में क्या होगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो हट जाएंगी टाइटल के अलावा। वी डोंट वांट दैट, राइट। सो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि वी कीप इट लाइक दिस। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा बार आती है तो सेकेंड टाइम वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो ओवरराइड कर देती है उसको, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दोबारा से टाइटल मेंशन कर दूं,
टाइटल इक्वल्स टू कुछ भी लिख दो यहाँ पे ABC। तो अब ये वाला जो टाइटल है वो ओवरराइड कर देगा इसको। अगर इसको सेव करता हूँ, यू कैन चेक, वापस जाते हैं हम, देखो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ABC पहले से सेट हो गई। ठीक है, अगर ABC हम पहले यहाँ रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं A से तो भी ABC ही सेट हो रही है क्योंकि ये वाला ओवरराइड कर रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर ऑल्सो। यहाँ पे हमने पूरा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके बाद हमने इसको रखा हुआ है ताकि जो ये हैंडल इनपुट चेंज जिस एलिमेंट से ट्रिगर हुआ है, बिकॉज सारे एलिमेंट में यही हैंडल इनपुट एलिमेंट पड़ा हुआ है, राइट। तो जिस एलिमेंट से ट्रिगर होगा उसी का टारगेट ये कैच करेगा और उसी की वैल्यू को ये सेट कर देगा। ठीक है, नेम और वैल्यू को, मतलब की और पेयर, की वैल्यू पेयर जो है वो इस ऑब्जेक्ट में ऐड कर देगा। तो हमारा जो कोर्स है वो अपडेट हो जाएगा विद दैट वैल्यू। और इस पूरे ऑब्जेक्ट को मेंशन करने की जगह शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 कोर्स। ये सेम चीज फॉलो होता है एरे के केस में भी। दिस इज फॉर जेसन ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन डिक्लेयर इन ए सिमिलर मैनर। और फिर हमने ये जो बता रहा था मैं कि इसकी जगह सिर्फ वैल्यू सेट करने की जगह हमने ये क्यों रखा है, ताकि हम जो चाहते हैं कि जो रेटिंग हो उसको हम नंबर फॉर्म में, मतलब जो डेटा टाइप है उसका नंबर रखना चाहते हैं। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो फिर वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, तो इसीलिए। सो जस्ट फॉर द केस वेयर नेम इज इक्वल्स टू रेटिंग, वहां पे क्या करेंगे, उसका पार्सिंग कर देंगे हम वैल्यू को। अगर ये स्ट्रिंग में है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज जो वैल्यू है एज इट इज वो डाल देंगे। ये हो रहा है यहाँ पे। तो हैंडल इनपुट चेंज समझ गए। हैंडल सबमिट, अगेन ये हैंडल सबमिट जो है ये फॉर्म से बाइंड होगा यहाँ पे, फॉर्म के ऑन सबमिट पे। और जब फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, सिंपली पहले हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट किया, फिर उसके बाद कोर्सेज को फेच कर रहे हैं। अगेन दिस विल बी HTTP कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3000 कोर्सेज। तो पहले तो कोर्सेज को लेके आए। अच्छा ठीक है, ये पोस्ट कॉल है तो ये एंड पॉइंट मेंशनड है। उसके बाद फिर ये तुम्हारे बॉडी में, और मेथड क्या है, हेडर्स क्या है, ये तुमको मेंशन कर देना है। मेथड पोस्ट, हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एंड देन योर बॉडी विच इज योर कोर्स विच वाज सेट विथ ऑल द चेंजेस दैट यू आर डूइंग इनसाइड द फॉर्म। ठीक है, ये सेट होता जा रहा है हर एक उसके साथ। ठीक है, चलो देन व्हाट नेक्स्ट वी हैव, जब अगर ऐड हो जाएगा तो कोर्स एडेड सक्सेसफुली हमने मेंशन कर रखा है, एंड देन एवरीथिंग एल्स इज सो फार गुड। सो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव किया। एक सेकेंड, व्हाट वाज द चेंज दैट वी हैड डन। आई थिंक वी आर गुड। लेट्स गो बैक टू दिस। और ये कंसोल पे जो हम कहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, विल सी कहाँ कर रहे हैं, बट फॉर नाउ लेट्स ऐड वन कोर्स। जावा डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल लो, कोर जावा कॉन्सेप्ट्स, ड्यूरेशन 12 आवर्स, रेटिंग दे लो, और इंस्ट्रक्टर डाल लो कुछ, बिगिनर, लैंग्वेज इंग्लिश, और कैटेगरी वेब डेवलपमेंट कर लो। ऐड किया, कोर्स एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और कोर्स एडेड सक्सेसफुली यहाँ पे हमने लॉग करके रखा हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो चेक कि जो डेटा पास हुआ है उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ क्या थी। तो जो डेटा पास हुआ है दैट इज दिस। टाइटल में देखो हमने जावा डाला था, लेवल बिगिनर, रेटिंग 3 जो कि नंबर है इसका, डेटा टाइप जो पास हुआ है, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड वेब डेवलपमेंट जो कैटेगरी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ऐड कोर्स विल वर्क। लेट्स वॉक यू थ्रू द फॉर्म एलिमेंट्स। इनपुट एलिमेंट है फॉर टाइटल, इसकी प्रॉपर्टीज है नेम, वैल्यू, ऑन चेंज, प्लेस होल्डर एंड क्लास नेम, क्लासेस विच आर डिफाइंड फॉर दिस। ठीक है, सेम फॉर द नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एरिया फॉर डिस्क्रिप्शन। ड्यूरेशन के लिए इनपुट फील्ड है, लेबल के लिए हमने, सॉरी रेटिंग के लिए हमने लेबल रखा है। जो इनपुट फील्ड है इसका टाइप आप रेंज कर दोगे ना तो फिर आपको ऐसा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ और स्लैश ऐड कोर्स पे जाता हूँ तो ये एक रेंज आपको डेटा रेंज आपको मिल जाता है सेट करने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हो,
स्टेप सेट कर सकते हो कि स्क्रॉल में, मतलब इसको स्लाइड करने पे कितना इंक्रीमेंट कितने स्टेप से होता है, ठीक है। वैल्यू हर एक, इसके लिए वैल्यू हमारी ऑलरेडी सेट है, कोर्स डॉट ड्यूरेशन, ठीक है। देन कोर्स डॉट ड्यूरेशन, कोर्स डॉट लेवल, बाकी लास्ट में 3 सेलेक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वन फॉर, दिस इज फॉर लेवल, this is for language, and this is for the category, ठीक है। So this is your form for adding the course, and I just explained you how it is working so far. So we are good with the add course. Now we will go back to my courses. My courses के लिए क्या करना है, पहले तो my courses देख लेते हैं कि is it working or not. My courses, no, with hyphen, I think it's working, but it is saying no courses found. If we go to enrolled courses, first let me just explain what all things we are doing inside this component. So let's start with the return statement. हमने यहाँ पे कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं, पहले हम चेक कर रहे हैं कोर्सेज का लेंथ, अगर ये 0 है तो हम मेंशन कर रहे हैं नो कोर्सेज फाउंड, अदरवाइज यहाँ पे हम कोर्सेज का लिस्ट दिखाएंगे। और ये कौन से कोर्सेज होंगे, जो कोर्सेज जो ये यूजर से आप लॉगिन किए हो, विच इज अ कैंडिडेट, तो उससे एनरोल्ड जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अब वो कहाँ पे एसोसिएशन मिलेगा, वो आपको मिलेगा db.json में, बिल्कुल लास्ट में अगर चलते हैं हम, तो यहाँ पे देखो एनरोलमेंट्स है। तो ये जो यूजर आईडी है वो इस कोर्स को एनरोल्ड है, इस कोर्स में को एनरोल करके रखा है इस यूजर ने। अगेन दिस यूजर आईडी 3 हैज एनरोल्ड टू दिस कोर्स, कोर्स आईडी 2, ठीक है। हम जिस यूजर से लॉगिन करेंगे, लेट्स से इफ वी लॉगिन टू दिस एज अ कैंडिडेट एंड पासवर्ड, ठीक है, हमने लॉगिन किया इसको इस यूजर से, ठीक है, जिसका जो यूजर आईडी है वो 2 है। सो इफ वी गो टू दिस एनरोलमेंट, तो यूजर आईडी 2 जो है वो कोर्स आईडी 1 को एनरोल, उसका एनरोलमेंट है इसके साथ, ठीक है। द यूजर आईडी 2 हैज एनरोल्ड टू दिस कोर्स। सो नाउ इफ वी गो टू माय कोर्सेज, it should appear here. We are getting some errors, so we will check that. Okay, I think what is the error, the error should be everywhere this masking is done. Actually, what we should be doing, let's just set this proxy also, ठीक है। इस proxy को set करने के लिए क्या करना है, you will have to go to tailwind, sorry, vite.config.js file, and then all you need to do is set a server here, ठीक है। तो server set करो, and then inside the server you will have a proxy, and inside the proxy you will have the keyword which is /API, and whenever this /API keyword is used inside the application, what, okay, here it will not be semicolon, it will just colon, ठीक है। What we need to set first the target, which will be http localhost colon 3000, ठीक है। टारगेट के बाद हमें क्या करना है, चेंज ओरिजिन को ट्रू कर देना है। ऑल्सो one other property which is rewrite, क्या होगा, एक एरर फंक्शन बना लो, and this will be basically path dot replace, and what do we want to do here, / and / API, and then / this is for, this is a regular expression which will detect wherever, if you use anywhere either /API or just API, and then after that you can mention the endpoint to hit a particular entity. Let's say if you mention courses, so if you mention anywhere in your project this, so that will eventually hit to this endpoint, ठीक है।
अब now after setting this, अगर if you set this anywhere in your project, that will be equivalent to this. ठीक है, so this is done now. Let me remove these things and see if that works. If we go to enrolled courses, this is what it was defined. Let me log in back as this user. ठीक है, if you go to my courses, again something is wrong. Fetch enrollments. Okay, this is double slash. Now if we log in back again, this is little bit. So yeah, if we go to my courses, now you can see the one course which this user was enrolled to. You can see that course here. ठीक है, now let's understand this component my courses little bit, how this is working. If we go to the page, the component called my course enrolled courses, how it is working. First of all, we have created here few use states, user, and then is user logged in, and then enrolled courses, and then courses. ठीक है, यूज इफेक्ट में वी आर फेचिंग द एनरोलमेंट्स फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एरे में the second argument of this use effect as this is logged in inside the array. That means whenever there is a change to this state, then this will be called, and also the first time when this component is mounted. ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तब भी ये कॉल होगा, एंड एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ चेंज टू दिस स्टेट तब ये कॉल होगा. ठीक है, सो फेच एनरोलमेंट्स हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट में रख लिया है, एंड देन दिस विल बी कॉल्ड. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पहले हम ये स्लैश एनरोलमेंट्स जो भी हैं उनको पहले लेके आ रहे हैं. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इसको, यहाँ पे अगर हम एनरोलमेंट्स को लेकर के आते हैं, सो यू विल गेट दिस डेटा. ठीक है, फिर इसको लाने के बाद क्या हो रहा है कि ये इसको फिल्टर कर रहा है बेस्ड ऑन द यूज़र आईडी. ठीक है, जिस यूज़र आईडी से लॉग्ड इन हो तुम, ठीक है, यूज़र में डेटा आपको कहाँ से मिला, ये यूज़र का डेटा तुमको मिला जो हमने कॉन्टेक्स्ट बना के रखा हुआ है. राइट, हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट बना के रखा है. अगेन एट दिस, इस पेज पे भी जिस यूज़र से तुमने लॉगिन किया है उस यूज़र का डेटा रिक्वायर्ड है. यू नीड द आईडी ऑफ दैट यूज़र. राइट, तो उसको हमने यूज़र कॉन्टेक्ट से फेच कर लिया. नाउ वी हैव द एक्सेस टू यूज़र डेटा, और फिर इस यूज़र डेटा का यूज़र आईडी हम कंपेयर करा ले रहे हैं जो भी एनरोलमेंट का यूज़र आईडी है उससे. ठीक है, और कंपेयर करने के बाद ये जो एरे बन रहा है हमारा यूजर एनरोलमेंट्स, इसका लेंथ चेक कर रहे हैं हम. अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर उसमें इसके कोई भी एनरोलमेंट्स हैं इस यूजर के, देन वी आर सेटिंग द एनरोल्ड कोर्सेज. ठीक है, एंड देन अगेन वी आर डूइंग द फेच कोर्सेज विथ यूजर एनरोलमेंट्स. ठीक है, और हम फिर उन जो कोर्सेज हैं उनको फेच कर लेंगे पास करके यूजर एनरोलमेंट्स को. ठीक है, ये फेच कोर्सेज जो है ये यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, जिसके अंदर पास हो रहा है हमारा यूजर एनरोलमेंट्स. यू कैन ऑल्सो चेक कि ये इसमें पास क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग एंड यूजर एनरोलमेंट्स को यहाँ पे देख लो. लेट्स पुट इट इनसाइड ए डबल कोट्स ऑल्सो, just to understand that that is being logged. ठीक है, no courses, you'll have to log in it again and again because on logout, on refresh it logs out. ठीक है, इसको सेव किया. नाउ इफ यू गो टू माई कोर्सेज यू कैन सी यूजर एनरोलमेंट्स में ये एक एरे निकल के आ गया. ठीक है, जिसका आईडी यूजर आईडी और कोर्स आईडी है. दिस वाज द यूजर आईडी, आई मीन दिस इज द आईडी विच गॉट मैच्ड विद द लॉग्ड इन यूजर आईडी. ठीक है, सो अब इस यूजर एनरोलमेंट्स को तुमने इसमें फेच यूजर्स में पास कर दिया, सॉरी फेच कोर्सेज में, एंड देन यू कैन फेच दी कोर्सेज. यहाँ पे तुमको जो जो कोर्स आईडी मिलेगा उस कोर्स आईडी के बेसिस पे तुम कोर्सेज को फेच कर लोगे. ठीक है, फेच द कोर्सेज entirely and then filter the array based on the course IDs. ठीक है, which is what is happening here. And then once
दिस यूजर कोर्सेज इज फिल्टर, देन वी आर सेटिंग टू द कोर्सेज। ठीक है, इवेंचुअली कोर्सेज हमारा सेट हो गया और वो यहाँ पे हमें नीचे हमने इसको मैप प्रॉपर्टी यूज करके कोर्स कार्ड में रेंडर करवा दिया है। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। Cool. So we are good with my courses also. Now, if we go to view details, I think this navigation will not work as of now. Again, if we click to view details, nothing is happening because I think inside the course card, if we go to component, if we go to course card, ये जो है वो uncomment है, इसको commented है, इसको uncomment कर देते हैं and यहाँ पे what we will do, we will set up a detail page. So detail page set करने के लिए again we will have to create a page. यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं which will be course detail.jsx and these are the details of any particular course which you will select. Now let's walk through this component also. ये return statement है जिसके अंदर पूरा HTML content है starting में. These are just simply Tailwind CSS classes to show this page in a certain way. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हम शो कर रहे हैं और ये कोर्स को वी विल फेच, विल शो यू कि कहाँ पे इसको हमने ऊपर कैसे फेच किया है, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि कोर्स ऑब्जेक्ट को हम लोग फेच करके यहाँ पे ये वैल्यूज को हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लैंग्वेज की कैटेगरी की। देन based on the condition whether it is logged in and then another condition that what is the role, अगर admin है then we will show these options delete course and edit course, और अगर admin नहीं है candidate role है then we will show enroll button। ठीक है, so these are the conditional rendering for showing the different buttons। now let's come back here at the different event handlings। देखो on delete click जो है ये delete button जो नीचे रहेगा एडमिन के लिए उस पे कॉल होगा। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, फर्स्ट we are just showing the confirm dialog box, are you sure you want to delete the course? If that is true then we are going ahead and deleting the that particular record। delete करने के लिए क्या करना है, simply api/courses and then slash mention the id, the course id which you want to delete। ठीक है, and then the method delete should be passed and that is enough for the fetch। and then since this fetch is a promise then we have made couple of then statements and we are just logged it on the console, course deleted successfully। second, for the on enroll click, so जब enrollment पे click होगा, if a candidate is logged in and candidate clicks on the enroll button then हमें eventually करना क्या है, हमें एक एंटिटी यहाँ पे ऐड करनी है, राइट। बेसिकली इस सॉरी नॉट द एंटिटी में एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी एडेड हैं, एक और ऑब्जेक्ट इसमें ऐड होगा व्हेन अ यूजर एनरोल टू अ कोर्स। ठीक है, विथ यूजर आईडी, कोर्स आईडी एंड एन आईडी फॉर द एनरोलमेंट। सो ये चीजें ऐड होने के लिए वी हैव दिस व्यू डिटेल पेज। वेयर इज दैट, कोर्स डिटेल पेज, सॉरी। ठीक है, तो ऑन एनरोलमेंट में देख लो क्या करना है, एक पोस्ट कॉल करेंगे हम और यूजर आईडी और कोर्स आईडी हमने जो मिलेगी यूजर की और जो कोर्स की उसको असाइन कर दिया है हमने और सिंपली ये पोस्ट कॉल कर दिया है और सक्सेसफुली एनरोल्ड यहाँ पे इफ it reaches at this step, if the API is successful then it shows the successfully enrolled on the alert box। ठीक है, next we have for check enrollment also, this method is just to check if that candidate is already enrolled to that course। ठीक है, for example right now it has some errors, so okay, on view detail click is not defined, so that is what we wanted to define। so since we have written this course detail page, let me go back to course card page and we have this event। let's go on the top and declare this an arrow function and inside this
what we want to do is we just want to navigate. नेविगेट भी डिफाइन नहीं है, तो उसको भी पहले आप यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट कर लो, यूज नेविगेट। ठीक है, यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम and then declare a variable here, constant navigate, use navigate, and then using this variable we can navigate to, here we will need a backtick slash courses slash, and we can pass the id by using dollar। ठीक है, dollar and the curly braces course dot id। ठीक है, तो ये कोर्स इसको कहाँ से मिला है, दिस इज अ कोर्स कार्ड, और इसमें यहाँ से ऑलरेडी एक प्रॉप पास हो रखा है कोर्स, सो यू विल हैव एक्सेस टू आईडी ऑफ दिस कोर्स, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो जब किसी कोर्स कार्ड के आप कोर्स मतलब डिटेल व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, सो इट विल नेविगेट टू द करस्पॉन्डिंग कोर्स। ठीक है, क्योंकि हम पैरम में क्या पास कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं उसके। तो ये इसको सेव कर लो, एंड द सेम थिंग यू विल हैव टू अपडेट योर ऐप JSX विथ द कोर्स courses slash the id। और इसको कैसे करेंगे अपडेट, वी विल गो टू द app.jsx file, let's add one route here which will be slash courses slash colon id, this is how you declare it। और यहाँ पे the corresponding component which you want to navigate to once this pattern is matching। ठीक है, इसको सेव किया। now let's go back, if I am clicking on this view detail, this is navigating to a particular page। ठीक है, let's go to home, इस पे क्लिक किया, ये UI UX डिज़ाइन पे जा रहा है। let's go to all courses, यहाँ से भी देख लो Python for data analysis पे क्लिक किया, Python for data analysis और all the details। now here at the bottom you see there are no buttons, edit this edit या delete या enrollment के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, because the buttons are rendered there dynamically। let me close all these and open the course detail page। ठीक है, course detail page में नीचे चलते हैं और देखते हैं कि how these buttons are added। सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन है, देखो is logged in, अगर यूजर लॉग्ड इन है तभी ये बटन्स दिखेंगे, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी बटन नहीं दिखेगा। तो पहले तो लॉग इन कर लो, एंड देन सेकेंड थिंग इज, जब यूजर लॉग्ड इन है देन बेस्ड ऑन द रोल्स हमें बटन दिखाने हैं कि कौन से बटन यहाँ पे विजिबल होने चाहिए। तो जैसे एडमिन इस समय लॉग्ड इन है, तो अगर यूजर का रोल एडमिन है देन वी वांट टू शो दीज टू बटन्स, एडिट एंड डिलीट कोर्स, अदरवाइज वी विल शो एनरोल कोर्स, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी दीज टू बटन्स। और इन दोनों बटन्स का इवेंट हैंडलिंग इसका ऑन डिलीट का और एडिट कोर्स का हो रखा है। एडिट का तुम क्या कर रहे हो, वापस से वी आर नेविगेटिंग टू दिस एडिट कोर्स, जो पेज हमने क्रिएट किया नहीं है अभी, सो वी विल ऑल्सो क्रिएट दैट, बट फॉर नाउ वी विल सी वेदर दिस डिलीट इज वर्किंग ऑन नॉट। सो इफ what we will do, we had added one course, right, this Java course, we will delete this course and see whether the delete functionality is working। we clicked on delete, are you sure you want to delete this, yes, course deleted successfully। ठीक है, अभी courses list में जाओगे, that course is no longer available। ठीक है, so delete काम कर रहा है। let's go and create the edit page now। so edit course के लिए what we will create is a page and we will mention it edit course.jsx, and then inside that page we will have pretty much similar file as we have for the add course। ठीक है, add course में you had this form, right, on submit we have a handle submit function, and then all these fields which are exactly the same the way it was in add course, is just that in case of edit course हमको वैल्यूज को पहले से ऑटो पॉपुलेट करना पड़ेगा फॉर्म पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले हमने तो ये एक स्टेट डिफाइन की है कोर्स के लिए। ठीक है, और इसकी इनिशियल वैल्यूज भी एम्प्टी ही रखी हैं, बट वी विल हैव टू फेच द डिटेल्स ऑफ दैट कोर्स, और फिर हमको उसको उस पर ऑटो पॉपुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया है, यूज इफेक्ट यूज किया है, एंड वी आर फेचिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स बाय पासिंग द आईडी हियर। ठीक है, हमें ये आईडी कहाँ से मिली, हमको आईडी मिली है यूज पैराम्स यूज करके।
ठीक है। यूज पैराम्स क्या है, ये भी तुम रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर सकते हो। एंड देन वी हैव डिक्लेयर्ड अ प्रॉपर्टी हियर कॉल्ड आईडी। और यूज पैराम्स, जब इफ यू वांट टू, if you will log this on the console, then you will see you actually get the id to which you are actually the params that you pass when you click on that link। ठीक है, जैसे app.jsx में जाओगे तो ये स्लैश के बाद ये जो है ना, ये पैराम, ये बेसिकली पैराम है। तो इसको आप एक्सेस कर रहे हो यूज पैराम्स यूज करके। ठीक है, इसको देख लो कैसे काम करता है। अगर मान लो मैं इसके व्यू डिटेल्स में गया और नाउ मैंने एडिट पे क्लिक किया। अच्छा, एडिट कोर्स का जो पाथ है वो अभी सेट किया नहीं है ना हमने, तो एडिट कोर्स का भी सेट कर लेते हैं। ऐड कोर्स है, सिमिलरली इस टाइप का होगा ना वो, तो यहाँ पे कर लो एडिट कोर्स और ये जाएगा एडिट कोर्स पेज पे। सो सेव किया, कम बैक। ठीक है, तीन हमने जब पास किया तो देखो कंसोल में यहाँ पे देखो आईडी जो है वो तीन पास हो रही है ना। इस तरह से हम यूज पैराम जो हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं ना, वो ऐसे ही आता है। अगर इसको देखना है तो और क्लियरली वी कैन पुट दिस इनसाइड अ कोट एंड देन यू कैन सी दिस इज व्हाट बीइंग लॉग्ड। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया है और आईडी को अब हम कैप्चर कर रहे हैं और वही यहाँ पे पास हो रखी है। तो ये आईडी को पास करके वी आर गेटिंग द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, और फिर जब ये हमें मिल जा रहा है तो फिर हम क्या कर दे रहे हैं, कोर्स को सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, और जब ये सेट हो गया तो फिर जब डेट कोर्स की वैल्यू अपडेट हो गई तो फिर यहाँ पर भी वो डिटेल्स फिलअप हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज एवरीवेयर इन द वैल्यू सेक्शन यू हैव बाइंडेड दोज वैल्यूज। ठीक है, कोर्स डॉट टाइटल यहाँ पे बाइंड है, यहाँ पे कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन बाइंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऑन सबमिट देख लो, ऑन सबमिट में इसने जो मेथड है वो इंस्टेड ऑफ पोस्ट पुट रखा है। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे डिफॉल्ट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है। ठीक है, सो दैट एनी डिफॉल्ट बिहेवियर डजंट अपीयर ऑन फॉर्म सबमिट। फिर हम लोग इसको कॉल करेंगे पासिंग दी आईडी फॉर विच द कोर्स वी वांट टू अपडेट। उसकी आईडी पास करेंगे, पुट हेडर्स एंड बॉडी, बॉडी में कोर्स पास करेंगे जो अपडेटेड कोर्स है। अगेन कोर्स भी सेट करते वक्त यहाँ पे देख लो जो हैंडल इनपुट चेंज है सिमिलरली हो रहा है जैसे कि ऐड कोर्स में हो रहा था। जस्ट इन केस ऑफ रेटिंग यहाँ पे नंबर, हम इसको जो डेटा टाइप है उसको नंबर कर दे रहे हैं जस्ट रेटिंग के केस में, अदरवाइज वैल्यू को ही सेट रख रहे हैं। ठीक है, तो हैंडल सबमिट में बॉडी में कोर्स पास हो गया, इफ रिस्पॉन्स इज ओके, नॉट ओके बिकॉज एक्सक्लेमेशन मार्क है, देन वी आर थ्रोइंग एन एरर, अदरवाइज कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली का अलर्ट है। ठीक है, एंड देन वी आर नेविगेटिंग बैक टू कोर्सेज। तो ये हो गया तुम्हारा एडिट कोर्स। इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे कर लो अपडेटेड और रेटिंग को 4.7 से 4.4 कर दिया, आवर्स को 7 से 10 कर दिया। ठीक है, इंग्लिश नहीं, इसको हिंदी कर दिया। नाउ इफ वी अपडेट, कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके किया। नाउ यू कैन सी ये यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्रिंसिपल, रेटिंग हमने 4.4 कर दी थी, लास्ट में हमने एक अपडेटेड डाल दिया था कीवर्ड, और बाकी लैंग्वेज हिंदी कर दिया था। दीज ऑल द थिंग्स आर अपडेटेड नाउ। तो अपडेट भी काम कर रहा है अब। नाउ व्हाट एल्स वी हैव, basically you can add a course from here and then you can come to home. This also navigates to courses. You can update a course, you can delete a course. Let's see whether you can enroll to a course or not. Log out किया और let's log in as candidate and enter the password. ठीक है, माई कोर्सेज में गए, यू आर एनरोल टू दिस। अगर किसी कोर्स में ऑलरेडी एनरोल हो, ठीक है, और उसकी डिटेल्स को चेक करते हो तो फिर यहाँ पे एनरोल बटन नहीं आएगा। इसी डायनेमिक रेंडरिंग के लिए हमने कोर्स डिटेल पेज पे चेक एनरोलमेंट्स यूज़ किया हुआ है। राइट, यहाँ पे यू कैन सी चेक एनरोलमेंट्स। सो चेक एनरोलमेंट्स में क्या हो रहा है, वी आर
चेकिंग द एनरोलमेंट्स बाय पासिंग द यूजर आईडी एंड कोर्स आईडी, और उसके बाद सेट इज एनरोल्ड को हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर एक हमने एक स्टेट डिफाइन किया हुआ है, इज एनरोल्ड एंड सेट इज एनरोल्ड को, ठीक है। तो इनिशियली ये फॉल्स है, और उसके बाद हम एनरोलमेंट्स को चेक कर रहे हैं। अगर इसको कॉल करने के बाद इफ वी आर गेटिंग एनी डेटा, तो यहाँ पे लेंथ चेक करके बेसिकली हम इसका इस फ्लैग को ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं, इज एनरोल्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर शोइंग दैट बटन कि ये एनरोलमेंट के लिए whether this course can be enrolled or not. अगर already enrolled है then we don't need to show that button, right? So if we go to courses, अगर advanced react पे click करते हैं, then this user should be able to enroll to this course. Click किया, successfully enrolled. Now if you go to my courses, यहाँ पे दो courses दिखने लगे, ठीक है, advanced react और react basics. home पे आ जाओ, should be good. So I think this was all about the project creation into React. It's a basic CRUD app. You can add courses, enroll to a particular course, delete that course, and update that course as well. You can log in as admin and candidate. So try करो इस project को खुद से बनाने का. If you are able to build this project couple of times, then I think you will have a pretty good understanding of React, and you can start working on other projects as you go ahead in the journey of learning React. Okay, so this will be a good starter for you, and good luck.